Uttar Pradesh has Lucknowi adab, to Agra's taste of aesthetics, from Banaras's spirituality to Mathura's mysticity. And we are here to find if UP has what it takes to be Fit India Quiz champions. It is the same state that has produced nationalists like Mangal Pandey and Ram Prasad Bismil, who sacrificed their lives for the country. It is the home of judoka Garima Chaudhary, shooter Annu Raj Singh and badminton star Abhin Shyam Gupta. It is the home of culture and charisma. Saying so, we welcome you to the Fit India Quiz UP edition, presented by Ministry of Youth Affairs and Sports and Ministry of Education, with Fit India mission in celebration of Azadi ka Amrit Mahotsav. Azadi ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements. Fit India Quiz is the biggest Indian quiz on sports and fitness like none other. The Fit India Quiz provides an opportunity to students and schools to win cash prizes of Rs 3.25 crores and be the champion at state and national level. After the preliminary rounds, 360 schools will be participating in the state web round, where they will be competing with the selected schools from their respective state or union territory to become state or union territory champion and represent their state or union territory in the national finals. Without any more delay, let's go to our virtual auditorium to meet our quiz master for today. उत्तर प्रदेश कई मायनों में उत्तम प्रदेश है। देश का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ राज्य अब अपने नौजवानों के जरिए बताएगा इस देश और दुनिया को कि क्विजिंग के मामले में भी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो सकता है, अव्वल आ सकता है। You're watching the Fit India Quiz State Finale. It's the Uttar Pradesh edition. We've got 4 teams vying for the top spot from their state, wanting to qualify for the national finals. And here we go. A quick introduction of the 4 teams. Let's cut across to the Delhi Public School, Greater Noida. Good morning, young men. आपकी तैयारी कैसी रही है और क्या महसूस हो रहा है आज आपको? So we are feeling very good and we have prepared very good. Okay, now across to Swaraj India Public School from Kanpur. भाई कानपुर वाले जो लोग हैं उनकी खासियत अलग होती है। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, अपने नाम और क्या-क्या शौक है आपके? Hello sir, my name is Karthikeya Chaturvedi. So my name is Prakhar Patel and we represent Swaraj India Public School from Kanpur. Okay, Karthikeya and Prakhar, good luck to you for this state finale. Now across to Sacred Hearts Senior Secondary Public School from Bareilly. बरेली का झुमका खास है, लेकिन बरेली के 2 ये क्विज़र्स भी बड़े खास है, मैंने सुना है. Hello everyone, my name is Ishan Gupta. Hello everyone, my name is Sonam Mangwar. We are representing Sacred Heart Senior Secondary Public School, Bareilly. I love to play chess and cricket, and I have prepared very much hard for this quiz. And I like to Okay, play Ishan. volleyball. I like to play volleyball, and I have also prepared very nicely for this. Okay, 2 sport-loving youngsters from the Sacred Hearts Senior Secondary Public School from Bareilly. Good luck to the 2 of you as well. अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे सुंदर शहरों में से एक वाराणसी के सनबीम स्कूल लहरतारा के पास. आइए जानते हैं इन 2 कंटेस्टेंट्स को. Jai Hind everyone, I am Shashwat Mishra and I am Ayushman Dubey. We are representing Sunbeam School Lehartara. Okay, so the 4 teams are ready. The Delhi Public School, Swaraj India Public School, Sacred Hearts and Sunbeam School are here. सेमीफाइनल में तो इनकी परफॉर्मेंस धमाकेदार थी, लेकिन उस जोश को, उस उत्साह को एक और लेवल आगे बढ़ाने के इरादे से ये टीम यहाँ पर आई है, क्योंकि भाई प्राइज मनी बहुत बड़ी है, लक्ष्य है नेशनल फाइनल तक पहुंचना. आज जीतने वाली टीम को मिलेंगे 3.25 लाख रुपए. फर्स्ट रनर्स अप 1,10,000 और तीसरे स्थान पर आने वाली टीम जीतेगी 55,000 रुपए. लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य है नेशनल फाइनल तक पहुंचना और उस रेस में इस समय 4 टीमें शामिल हैं. लेकिन याद रहे कि आज इस स्टेट फिनाले में आपके पास होगी 3 लाइफलाइंस. आप सबको बता दूं उन 3 लाइफलाइंस के बारे में. सबसे पहली टॉस द क्यू यानी कि चेंज द क्वेश्चन, हम आपके लिए सवाल बदल देंगे. दूसरी लाइफलाइन है हेड और टेल, जहां पर हम 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस हटा देंगे. और तीसरी कैप्टन फिट,
जहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे एक्सपर्ट ओपिनियन। आप एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। अगर उनको सवाल का जवाब पता है, आप तय कर सकते हैं आप उनके साथ जाना चाहेंगे या नहीं। और आज के हमारे कैप्टन फिट है मिस्टर कौशिक रॉय। स्वागत कीजिए रॉय साहब का। कौशिक दा, आप तैयार हैं? Yes, thank you very much. हाँ, तैयार है. And welcome to all the students here for this edition. And if you feel anything, any trouble, you just get in touch with me. I'll try to help you out as much as possible. And best of luck to all the teams. Okay, there it is, Mr. Kaushik Roy wishing the 4 teams good luck. But we've got a very special message from a very, very special person. Here, take a look. नमस्कार, मैं प्रियंका गोस्वामी अपने स्टेट उत्तर प्रदेश से क्वालिफाई करने वाली चारों टीमों को बधाई देती हूँ। दे हैव पास्ड ऑल हर्डल्स एंड रीच द फिट इंडिया क्विज स्टेट फाइनल्स बाय बीटिंग अदर टीम्स। आई विश देम गुड लक। मे द बेस्ट टीम विंस। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया इतने खास मैसेज के लिए। तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों, तैयार हो जाओ इस स्टेट फिनाले के लिए। 5 राउंड्स होंगे। सबसे पहला राउंड होगा फिटनेस की डोज। आइए जानते हैं इस राउंड के नियम। Fitness की dose. Questions on yoga, fitness and nutrition. Clockwise round. Each team will get 15 seconds to answer a question after the quiz master has read it out. Direct questions to each team. No passing. Correct answer will fetch 10 points. No negative marking. Lifelines are available. If lifeline is used, correct answer will fetch 5 points. The quiz master's decision is final. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यूपी स्पेशल स्टेट फिनाले के पहले राउंड के पहले सवाल के साथ। दिस वंस फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा। हियर वी गो फॉर दिव्यांशु एंड मोहम्मद। What name is given to a device or application for monitoring and tracking fitness-related metrics such as distance walked or run, calorie consumption, and in some cases, heartbeat? Your options are fitness tracker, burn tracker, sweat tracker, and diet tracker. And your time starts now. Divyanshu and Mohammed? We would like to go with option A, fitness tracker. Okay, they've gone with option A. Let's find out if that's the correct answer. It is fitness tracker. Well done. Flying start there by Divyanshu and Mohammad Ayan from Delhi Public School, Greater Noida. What a way to start off the mark straight away. Now on to the Swaraj India Public School, Kanpur. Kartikeya Prakhar, अगर आप तैयार हैं, ये रहा आपका पहला सवाल. A paste made from Japanese horseradish, ground rhizomes, is used as a pungent condiment for sushi and other foods, which is known to reduce blood pressure, improve bone strength and liver function, and kill cancer cells. What is it commonly known as? Your options are A. Zinger, B. Wasabi, C. Karashi, D. Mustard. Kartikeya and Prakhar, your time starts now. So we would like to go with B, wasabi. Okay, they've chosen B. Wasabi as their option. It is the correct answer. Now, wasabi may be pungent, but the answer was sweet as sugar for Swaraj India Public School. They're off to a good start as well. Now, for the third question for Ishan Gupta and Sonam Gangwar from Sacred Hearts, Bareilly. Here we go. Modern indoor dash are often known as ergometers. Colloquially, erg or ergo, because they measure work performed by the dash, which can be measured in ergs. Fill in the blank. Your options are A. Rowers, B. Fencers, C. Gymnasts, D. Cyclists. Ishan and Sonam, your time starts now. 5 seconds left. So we would opt for lifeline, Captain Fit. Okay, just in time they've called for a lifeline. What lifeline would you like? Captain Fit. Okay, time now to call upon Mr. Kaushik Roy. Yes. Over to you, sir. I would suggest you go for option A, rowers. Okay, sir. Secret Arts, happy with that? Yes, sir. Yes, sir. You go with Captain Fit. Okay, so they've decided to go with A, rowers. Let's find out if that's the correct option.
It is. Thank you, Mr. Roy. Thank you, Captain Fit. And well done, Sacred Hearts, for calling for that lifeline just in time. Now, on to the fourth and final question of this first round. Let's go across to Sunbeam School, Varanasi. Here's your question. In bodybuilding and weight training, using dash sets is a technique for continuing an exercise with a lower weight once muscle loss has been achieved at a higher weight. Fill in the blank. A. Dip. B. Drop. C. Super. D. Circuit. And your time starts now. So we would like to go with option B, drop. Okay, quick answer within 3 seconds. Here we go. B. Drop is the correct answer. That's a mic drop moment from Sunbeam School. What a lovely start that is. भाई मजा आ गया उत्तर प्रदेश वालों ने जिस तरह से परफॉर्म किया है पहले राउंड में. 3 टीमों को लाइफलाइन की जरूरत नहीं पड़ी. सेक्रेड हार्ट्स, स्वराज इंडिया, दिल्ली पब्लिक, सनबीम, चारों टीमें ऐसा लग रहा है कि आज एक धमाकेदार यूपी फिनाले देने वाले हैं. अभी तो पहला राउंड हुआ है, 4 और बाकी. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पहले राउंड के अंत में क्या रहे स्कोर्स. कहीं मत जाइए. फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्विज, फिट इंडिया क्विज में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन फिट इंडिया मूवमेंट के द्वारा की गई इस पहल से जुड़ने का सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं. फिट इंडिया क्विज में देश के कोने कोने से भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी जी जान लगाकर एवं दिमाग से फिट इंडिया क्विज में भाग लेंगे और अपने विद्यालय, परिजनों एवं राज्य का नाम रोशन करेंगे. जय हिंद, जय भारत. उत्तर प्रदेश की क्विजिंग काबिलियत को देखने का इससे बेहतर मौका आपको मिल नहीं सकता. वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक टू द स्टेट ग्रैंड फिनाले ऑफ द फिट इंडिया क्विज, the Uttar Pradesh edition, presented by the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Ministry of Education with Fit India Mission in celebration of Azadi ka Amrit Mahotsav. The Fit India quiz, as you all know, is the biggest Indian quiz on sports and fitness. पहले राउंड के अंत में क्या थे स्कोर, आइए नजर डालते हैं. भाई दिल्ली पब्लिक स्कूल के अलावा स्वराज इंडिया और सनबीम स्कूल तीनों के 10-10 अंक है. सेक्रेड हार्ट्स ने लाइफलाइन की मदद ली, इसलिए उनके पास है 5 अंक, लेकिन उनको और बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं. स्कोर शीट पर बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है क्योंकि बाकी है 4 राउंड. अब बारी इस स्टेट फिनाले के दूसरे राउंड की, जिसका नाम है चैंपियन ऑफ चैंपियंस. हियर आर द रूल्स. Champion of Champions. Questions on sports and sports personalities. Buzz around. Correct answer will fetch 10 points. The question will not pass. Wrong answer will fetch -5 points. No additional lifelines for this round. The quiz master's decision is final. भाई यूपी वाले वैसे तो बड़े तेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो तेजी दिखानी पड़ेगी. बजर दबा के, यू गॉट टू बी रियली हॉट ऑन द बजर. 4 सवाल आएंगे, बजर राउंड है, तो देखते हैं कि कौन बाजी मार जाता है इस दूसरे राउंड में. गुड लक टू द 4 teams. Here we go with the first question of this second round. Gabriela Dabrowski partnered with which Indian player to win the 2017 French Open mixed doubles? We already have a buzzer from Delhi Public School. Divyanshu and Mohammed, what's your answer? The Rohan Bopanna. Okay, Rohan Bopanna. An easy one there. Rohan Bopanna, it is the correct answer from Delhi Public School. They are in the lead now. Well done, Divyanshu and Mohammed. चलिए अब दिखाते हैं आपको दूसरा सवाल. ये रहा. An Olympic finalist at Tokyo 2020. She's the first Indian woman to breach the 65-meter barrier in discus throw. Name her. स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल ने बजर दबाया है. कार्तिक के प्रखर, क्या जवाब है आपका? कमलजीत कौर. कमलजीत कौर, कमलप्रीत कौर, लेकिन ये जवाब मान्य नहीं रखा जाएगा. नाम कमलप्रीत था, कार्तिकेय और प्रखर के मुताबिक कमलजीत. Unfortunately, I will not be able to grant you that one, and you'll have to try again. 2 more questions left in this second round. The champion of champions. Here's the third question.
Name this Indian swimmer who was the first Asian to cross the English Channel. Sacred Hearts into it straight away. Ishan and Sonam, क्या जवाब है? Mihir Sen. They reckon it is Mihir Sen. It is Mihir Sen. Sacred Hearts dived straight into it. They knew exactly what the answer was. तो अब बारी इस दूसरे राउंड के चौथे सवाल की. ये रहा आपका सवाल. We're all fans of Sachin Tendulkar, but probably not greater than this individual, a dairy worker from Bihar who once pedaled to Pakistan to watch his idol play. Name him. Sunbeam, straight into it. This is Sudhir Chaudhary. Shashwat Ayushman. Sudhir Chaudhary. Sudhir Chaudhary. I will take that. His name is Sudhir Kumar Chaudhary. Good answer. Well done. तो चलिए सनबीम स्कूल ने भी यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है. चैंपियन ऑफ चैंपियंस में आखिरकार उनकी ओर से आया एक जवाब. दूसरे राउंड का अंत हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि आज ये चारों टीमें एक फोटो फिनिश देने वाली है. लेकिन इस दूसरे राउंड के बाद स्कोर शीट पर क्या असर हुआ है बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहीं ना जाए, यूपी वाले कमाल कर रहे हैं आज. फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है. फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज. इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, दो आधा घंटा फिटनेस को. ताजा खबर को ताजी हवा में पढ़ लो. अरे पार्क नहीं तो छत पर थोड़ी वॉक ही कर लो. सब्जी हो या तरकारी हाथों में भर लो. अरे 2 मंजिल का जीना है, सीढ़ी ही चलो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हो, दो आधा घंटा फिटनेस को. बस आधा घंटा फिटनेस को. फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज. वही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी की ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए. हमारे हृदय में इसे स्थान मिलना चाहिए. फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज. ये याद रखिए. फिट रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हर दिन रहिए, हर पल रहिए. लेकिन इस समय हर पल सभी के मन में सवाल ये है कि भाई ये उत्तर प्रदेश का जो फिनाले है, कौन जीतेगा, कौन पहुंचेगा नेशनल फाइनल्स तक. वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक टू द स्टेट ग्रैंड फिनाले ऑफ द फिट इंडिया क्विज. इट्स अ यूपी स्पेशल. It's presented by the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Ministry of Education and the Fit India Mission in celebration of हमारी अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव. लेकिन अब सवाल ये है कि पिछले राउंड के बाद स्कोर शीट पर क्या असर हुआ है, कौन सी टीमें ऊपर है, कौन सी टीमें नीचे हैं. आइए नजर डालते हैं स्कोर शीट पर. स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल कानपुर वालों जागो. 5 पॉइंट उनके पास, आखिरी स्थान पर है. उनके बाद सेक्रेड हार्ट्स सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल बरेली वाले 15 पॉइंट के साथ अब भी रेस में बने हुए हैं. लेकिन 2 ऐसी टीमें हैं जो आज धमाका करने के मूड से आई हैं. दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा और सनबीम स्कूल वाराणसी इस समय दोनों एक साथ 20 पॉइंट्स पर टिकी हुई है. देखना होगा कि इस अगले राउंड में कौन बाजी मार जाता है. इस यूपी स्पेशल फिनाले के अगले राउंड की बारी आ चुकी है. इस राउंड का नाम है मैजिक ऑफ स्पोर्ट्स. ये रहे इस राउंड के नियम. Magic of sports. Mixed bag audiovisual questions. Anti-clockwise round. Each team will get 15 seconds to answer a question after the video is shown and the quiz master has read it out. Direct questions to each team. No passing. Correct answer will fetch 10 points. No negative marking. No additional lifelines for this round. ऑडियो विजुअल क्लूज के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों. सबसे पहले हम चलेंगे सनबीम स्कूल वाराणसी के लिए ये वीडियो क्लू देखने. ये रहा. गजब के करतब, ये कमाल की कारनामे उस जिमनास्ट ने दिखाए. ये रहा उस वीडियो क्लू पर बेस्ड सवाल. Identify this Olympic event. Sunbeam School, your time starts now. Sir, this event is called trampolining.
Trampolining, good answer that. Here we go. It is a good answer. Trampolining. Sunbeam School catapulting themselves further ahead as compared to the other teams. Here we go now. The second video clue of Magic of Sports. Here we go. और ये रहा उस वीडियो पर बेस्ड सवाल सेक्रेड हार्ट्स के लिए. आइडेंटिफाई द स्पॉट. टाइम स्टार्ट्स नाउ. Paragliding. Is it paragliding? It sounded like a guess. It was base jumping, not paragliding. Wasn't to be for Sacred Hearts. No worries, we'll get many more chances up ahead. Time now to go across to Swaraj India Public School, Kanpur for their video. Take a look. Will face that in Indian sport, but here's the question based on those beautiful visuals. In this video, Deepa Karmakar, one of the only 5 women who have successfully landed this act, which is regarded as the most difficult one of those currently being performed in women's gymnastics. Name the act. Swaraj India, your time starts now. Sir, it's Produnova in gymnastics. Okay, Kartikeya Chaturvedi and Prakhar Patel reckon it is Produnova. Here we go. I will give you that. Good answer. Clearly a huge fan of gymnastics and the wonderful Deepa Karmakar. Good answer that from Swaraj India. That'll make them breathe better. A sigh of relief for the two of those contestants, Kartikeya and Prakhar. Time now for our 4th and final video clue of Magic of Sports. This one's for the Delhi Public School, Greater Noida, Divya, Anshu and Mohammed. If you're ready, here it is. Here's your question based on that video. Name this cyclist who was the first Indian to win a silver medal at the 2018 UCI Junior Track Cycling World Championships held in Egel, Switzerland. Your time starts now. Shiv Thapa. Is it Shiv Thapa? Let's find out. No, it isn't Shiv Thapa. It was S.O. Albin. Wasn't to be this time for Delhi Public School, Greater Noida. But good to see that Swaraj India have fought back in this round. Sunbeam, Sacred Hearts, Delhi Public School. The challenge is going to get tougher as we go ahead. We've come to the end of Magic of Sports. We'll take a break. Break के बाद बताएंगे स्कोर शीट में क्या उथल-पुथल हुई है. फिट इंडिया क्विज के इस उत्तर प्रदेश फिनाले के 3 राउंड हो चुके हैं. मुकाबला काफी टक्कर का चल रहा है 4 टीमों के बीच. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. इस क्विज को हम देख रहे हैं, इसका मजा ले रहे हैं थैंक्स टू the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Ministry of Education with Fit India Mission in celebration of Azadi ka Amrit Mahotsav.
फिट इंडिया क्विज, जैसे आप सभी जानते हैं, इस देश का सबसे बड़ा क्विज ऑन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। अब नजर डालते हैं तीसरे राउंड के अंत में स्कोर शीट पर। स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल और सेक्रेड हार्ट्स, ये दोनों टीमें इस समय तीसरे स्थान पर है 15 पॉइंट्स के साथ। दिल्ली पब्लिक स्कूल इस समय दूसरे स्थान पर है with 20 points. But Sunbeam School from Varanasi, Shashwat Mishra and Ayushman Dubey are absolutely rocking it. They're racing it. They have a 10-point lead over Delhi Public School. Greater Noida, they are at 30 points. Right, okay, here we go for round number 4, which is called Khelega Bharat. तो खिलेगा भारत, और ये रहे इस चौथे राउंड के नियम। खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत. Questions on Khelo India, Fit India and traditional games. Clockwise round. Each team will get 15 seconds to answer a question after the quiz master has read it out. The question will not pass. Correct answer will fetch each team 10 points. No negative marking. Lifelines are available. If lifeline is used, correct answer will fetch 5 points. The quiz master's decision is final. तो भाई चारों टीमों के खेलने का समय यही है। चौथा राउंड काफी क्रूशियल है। यहां पर अगर आप लीड ले गए तो फिर पांचवा जो प्रेशर राउंड है उसमें आप शायद थोड़ा सा प्रेशर कम महसूस करें। ये रहा पहला सवाल, ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा के लिए। इन गेला छठ, the in group selects one player as the king who takes up his position at a point about 20 to 25 meters away from his team members. All the players of the king's group are confined to a specified marked area which is called dash. What is dash? Your options are A. Ghar, B. Ghora or Ghoda, C. Roti, D. Soti. Delhi Public School, Divyanshu and Mohammed, your time starts now. Ten seconds. You have a lifeline if you'd like to take it. Sorry? Sir, we would like to go with A. Ghar. Okay, they've chosen A. Ghar. It is A. Ghar, just in time. Just in the nick of time. Divyanshu and Mohammed, I don't know if it was a guess. Whatever it was a good answer. Watch out, Sunbeam. Delhi have got this first one right. Now, the next question comes for Swaraj India Public School, Kanpur. In this sport, popular in Manipur, each player in the team of 7 assume the following positions. Pan, which is a fullback. Pan Angapa, that is. Pan Gakchun is a halfback. Pulluk, the left wing. Langje, the center. Pulluk, the right wing. Punjen, which is the in. Pun Jenchun, which is also the in. Name the sport. You've got 4 options. A. Khongkang J. B. Saret Sarak. C. Sheibi. D. Mukna. Kartikeya and Prakhar, your time has already started. So we would want to take Captain Fit. Okay, they'd like to take a lifeline which is available. They've asked for Captain Fit to bail them out. Let's now cut across to Mr. Kaushik Roy. Yes, students, you can choose the option A. Not my suggestion. Khong Khanjei. Will you go with option A, Swaraj India? Yes, sir. Please lock option A. Okay, let's find out if that's the correct answer. It is! The expert, Captain Fit, Mr. Roy, bailing them out. Good answer, that. Hong Kong J is the correct answer. Next question. This one's for the team from Bareilly, Ishan Gupta, Sonam Gangwar, representing Sacred Hearts Public School. Which indigenous form of wrestling in Manipur is traditionally played on the last day of the Lai Harauba festival and is also an intrinsic part of the ceremonial functions of the region? Your options are A. Vallam Kali, B. Jallikattu, C. Mukna, D. Thangta. Your time starts now. Option number C, Mukna. They've gone with option C, Mukna. Let's find out. Good and early.
It is Mukna. What an answer. Well done, Ishan Gupta and Sonam Gangwar. Terrific answer that. Nice and early. Within 3 seconds, they had the answer. And they've kept themselves in the game. I believe we're going to get a photo finish at the end of this contest. Now for the fourth and final question of this fourth round. Khelega Bharat. So Khelega Bharat. This one's for Shashwat and Ayushman from Sunbeam School, Varanasi. Assam finished 7th with 76 medals at the Khelo India Youth Games 2020. And the last gold medal event won by Ankushita Boro was in which event? Your options are A. Weightlifting, B. Boxing, C. Shooting, D. Athletics. Your time starts now. Sir, we would like to go with option B, boxing. Okay, they've gone with B. Boxing. It is boxing. That's a knockout punch from Sunbeam School, Varanasi. Well done, Shashwat Mishra and Ayushman Dubey. Well, all these four teams have shown their quizzing class in this fourth round. और इस चौथे राउंड के बाद भी मुश्किल लग रहा है तय कर पाना या एक विजेता चुनना. अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो मेरी मानिए मत कीजिए, क्योंकि चारों टीमें इस समय प्रबल दावेदार हैं इस यूपी फिनाले को जीतने के लिए. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद पांचवा और आखिरी राउंड और अपडेटेड स्कोर शीट्स. कहीं ना जाए. हेल्दी खाना 3 टाइप्स का होता है, गो, ग्रो एंड ग्लो. गो फूड्स हमें ताकत या स्ट्रेंथ देते हैं, ग्रो हमें बढ़ने या टॉल होने में मदद करते हैं और ग्लो फूड्स हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं. हाँ, गो, ग्रो एंड ग्लो फूड. बहुत अच्छे. तो स्वस्थ रहने के लिए दिन में हमें अपनी थाली में गो, ग्रो एंड ग्लो फूड्स चेक करने चाहिए. तो कौन से फूड्स गो, कौन से ग्लो और कौन से ग्रो होते हैं? गो फूड्स जैसे रोटी, चावल, ब्रेड और फैट्स हमें ताकत देते हैं. दाल, दूध, अंडे, मीट और मछली, इन्हें हम ग्रो फूड्स कहते हैं. फल और सब्जियां जिन्हें हम ग्लो फूड्स कहते हैं, इनसे हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं. मुझे विश्वास है अब तुम सबको पौष्टिक खाने के बारे में जानकारी हो गई है. एक और बात का ध्यान रखो, हम जब खाना खाएं तो उसका आधा हिस्सा फल और सब्जियां होनी चाहिए. याद रखना, अगर हम सही और पौष्टिक खाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे. हम गो, ग्लो और ग्लो करेंगे. उत्तर प्रदेश वासियों, एक धमाकेदार क्लाइमैक्स के लिए तैयार हो जाइए. We're back after the break to the final of the Fit India Quiz, the UP edition presented by the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Ministry of Education with Fit India Mission in celebration of Azadi का अमृत महोत्सव. Fit India Quiz इस देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट और फिटनेस का क्विज है. लेकिन स्कोर कार्ड पर किसकी फिटनेस बेहतर हुई है चौथे राउंड के बाद, आइए नजर डालते हैं. इस समय स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल को थोड़ा सा जागना है. कानपुर वालों जागो, अब भी मौका है आपके पास. दिल्ली पब्लिक स्कूल 30 पॉइंट के साथ है, रेस में बनी हुई है. इस समय चुनौती दे रही है सनबीम स्कूल को, जो है नंबर 1 पोजीशन पर with 40 points, whereas Sacred Hearts are reeling at the 3rd spot with 25 points. Sunbeam, the hot favorites at this stage. Team 1, Delhi Public School ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन देखिए ऐसा है कि इस राउंड में काफी उथल-पुथल मच सकती है. 12 सवाल आएंगे आप सबके लिए. ये है पांचवा और आखिरी निर्णायक राउंड, जिसका नाम है फ्री स्टाइल. ये रहे इस राउंड के नियम. फ्री स्टाइल, sports mixed bag questions. 12 questions on the buzzer. Correct answer will fetch each team 10 points. -5 for wrong answer after buzzer. No additional lifeline for this round. Quiz master's decision is final. 12 सवाल, सब कुछ निर्भर करेगा आपके बजर्स पर और सही जवाब देने की काबिलियत पर. आपके ज्ञान का प्रकाश डालिए खुद के जीवन में और बनाइए इस यूपी फिनाले को और भी रोमांचक. ये रहा इस पांचवें और आखिरी राउंड का पहला सवाल. Canada has 2 national sports. If lacrosse is the summer sport, name the winter sport. Straight away, Sacred Hearts into it. Ishan and Sonam, what's the correct answer? Ice hockey.
Ice hockey, they say very, very confidently. It is ice hockey. That answer, cool as ice. From Sacred Hearts Bareilly. They are back into it straight away. Here comes the second question. In an athletics race, what does DNF stand for? Which essentially means incomplete. The third one. Once again, Sacred Hearts with the buzzer. Did not complete. Did not complete. Is that the correct answer? DNF. Did not finish, it should have said. No, I will not be able to grant you that. Should have said did not finish. It was DNF, not DNC. Wasn't to be this time for Sacred Hearts. Moving on to question number 3. Which great English cricketer born in India had the initials MCC? Sunbeam School, into it now. Sunbeam. What's the correct answer, Sunbeam? Sir, K.S. Ranjit Singh ji. With the initials MCC. Well, let's tell you what the answer is. MCC should have been Michael Colin Cowdrey. I don't think you read or heard the question correctly. The correct answer is Michael Colin Cowdrey. Wasn't to be for Sunbeam. Careful, careful. Moving on to question number 4. Don Bradman was stumped 11 times in his first-class career and only once by an Indian wicketkeeper. Name him. A tough one, this. I will close this question in 5 seconds from now. Who wants to hazard a guess? A guess could be costly as well. Does anyone know the answer? No? Okay, no answers from any of the 4 teams. But for you and our viewers, here's the correct answer. It is Probir Sen. He got the super legend stumped out once. Right, moving on to the next question. It's question number 5. In the Mahabharata, what name was given to Arjun because he could shoot arrows with his left hand just as well as he did with his right? And with the same accuracy, Swaraj India from Kanpur seem to know the answer. Karthik and Prakhar, what's the correct answer? Ambidextrous. What name was given to Arjun? It couldn't have been ambidextrous. Anyhow, we'll check. Sabyasachi. They couldn't have used an English word in those days, could they have? That could cost you a little bit, Swaraj India. Moving on to question number 6. We are now approaching the halfway mark. Here it is. The wearer of the polka dotted jersey is awarded what title at the Tour de France? The Tour de France. Does anyone want to go for it? The wearer of the polka dotted jersey is awarded what title at the Tour de France? No, I'm going to close this out for the contestants. Oh, no, I'd already closed it. I will not be able to allow it. Sunbeam, you are a bit late on the buzzer. Cannot allow you to answer that question. The correct answer is King of the Mountains. We have already crossed the halfway mark. The other schools need to buck up. Delhi Public School need to as well. Moving on to question number 7. Who is the only cricketer to take 19 wickets in a single match, in a single test match? Sunbeam, want to go for it? Shashwat and Ayushman. Jim Laker. He took Jim 10 Laker, wickets they reckon in the it first is? inning and 9 wickets in the next inning. Okay, a little more than we expected. Jim Laker it is! भाई ये जवाब देखकर लग रहा है कि Sunbeam School ये जीत लेकर ही जाएंगे. Good answer that from Sunbeam School. Moving on to the next question. It's question number 8. Till 1984, the winners used to get the Walter A. Brown Trophy, which is now renamed as the Larry O'Brien Trophy. Which American league is this? Swaraj India Public School from Kanpur seem to know the answer. What is it? NBA. NBA, they say. Is it the NBA? It is the NBA. America's basketball league. Clearly the biggest basketball league in the world. Good answer that from these two youngsters from Kanpur, Karthikeya and Prakhar Patel. Moving on to question number 9. South African cricketer
Butta Dippina's full name is H.H. Dippina. The first H stands for Henrik. What does the second H stand for? Swaraj India, Kanpur, press the buzzer. Herschel Gibbs. Did you say Herschel Gibbs? Yeah. Okay, I don't think you heard or read the question correctly. Here's the correct answer. Human. It couldn't have been Herschel Gibbs, is another cricketer altogether. I don't think you heard the question. You were in a bit of a hurry to press the buzzer. Now this could cost you, Swaraj. Moving on, 3 more questions left. Here's question number 10. Which nation's cricket team is known as the Protea? Sunbeam, straight into it. Shashwat and Ayushman, what's your answer? South Africa, they say. It is South Africa. Good answer. I expected all 4 of you to know it, but Sunbeam were onto it like a flash. Moving on to the next question. We are approaching the finish line. Here's question 11. The Bermuda Bowl is awarded in which indoor sport or game? Secret Hearts Bareilly have pressed the buzzer. Ishan and Sonam. Bowling. What's the answer? Bowling. Okay, they reckon it is bowling. Bridge, no. It isn't bowling. Now on to the final question of this UP state finale. Listen to this carefully. The Corbelin Cup and the Swaddling Cup is played for the World Championship of which indoor racket sport? Swaraj India Public School from Kanpur going for it. Karthikeya Prakhar. Sir, table tennis. Table tennis. Is it table tennis? What a good answer it is. It wasn't an easy one, but they knew it straight away. Karthikeya Chaturvedi and Prakhar Patel from Swaraj India Public School have finished the 5th and final round with a flourish. Have they managed to win this one? Courtesy that answer, we'll find out. On the other side, we'll have the final scores to find out who has made it through to the national finals. UP वालों कहीं मत जाना क्योंकि स्कोर शीट शायद आपको चौंका दे. ब्रेक के बाद फाइनल रिजल्ट्स और प्रेजेंटेशन. लाइफ में चैलेंजेस कभी भी और कहीं भी आ सकते हैं और हम इनका अच्छे से तभी सामना कर सकते हैं जब हम तैयार हों इनको फेस करने के लिए. हम अगर हेल्दी और फिट हैं तो हमारी तैयारी और भी बेहतर हो जाती है. बस जरूरत है थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से अनुशासन की. प्रेजेंटिंग फिट इंडिया मोबाइल ऐप, आपका फिटनेस गाइड और पर्सनल हेल्थ ट्रेनर. पहली बार अब भारत का हर एक नागरिक अपना फिटनेस स्कोर पता करके जान पाएगा कि वो कितना फिट है. आप अपनी आयु के अनुसार अपने फिटनेस स्कोर की जांच कर सकते हैं. ये सुविधा खास आपके लिए पहली बार शुरू की जा रही है. ये ऐप आपके फिटनेस रूटीन को ट्रैक कर सारा डेटा स्टोर करता है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस देख सकें और फिट रहने के नए और आसान नुस्खे अपना पाएं. इस ऐप के साथ आप बन सकते हैं खुद के फिटनेस मास्टर. उसके बाद हम आपके फिटनेस रूटीन को बनाने में आपकी मदद करेंगे. फिटनेस की दुनिया में कदम रखें, मोटिवेटेड रहें और अपडेटेड रहें. और सबसे अच्छी बात है कि इन सारी सुविधाओं का लाभ आप पा सकते हैं एकदम फ्री. बस अपने एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइस पर हमारे ऐप का हिंदी और इंग्लिश वर्जन डाउनलोड करें और शुरू हो जाइए. आपका फिट रहने का सपना अब है एक क्लिक दूर. फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज. उत्तर प्रदेश से कौन सी टीम नेशनल फाइनल्स में जगह बना चुकी है? इस सवाल का जवाब मिलेगा कुछ देर में. आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एडिशन ऑफ द फिट इंडिया क्विज. ये है ग्रैंड फिनाले. इस राज्य से एक टीम आगे पहुंचेगी नेशनल फाइनल्स तक और इतना कमाल का क्विज हम देख पा रहे हैं थैंक्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद द फिट इंडिया मिशन इन सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव. लेट मी आल्सो रिमाइंड यू कि आप भी अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकते हैं फिट इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करके. प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पर भी. तो भाई इंतजार किस बात का, जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिट रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए हर पल हर दिन. और हर पल हर दिन एक सवाल इन चारों टीमों को सता रहा था पिछले कुछ दिनों में कि भाई क्या करना पड़ेगा फाइनल्स तक पहुंचने के लिए. What a UP finale we've had. 4 teams gave us some fantastic answers and here's what the score sheet looks like.
Guess what? We have a tie for the second spot. Unfortunately, Sacred Hearts bowing out in the last spot with 25 points. Team 1 and Team 2, that's Delhi Public School, Swaraj India, locked at 30 points. They have tied their scores, which means we will have a tiebreaker. But the winner, the team that's going through to the national finals, is from Varanasi. The Sunbeam School, represented by Shashwat Mishra and Ayushman Dubey, will be competing, will be representing Uttar Pradesh at the national finals. Congratulations to Sunbeam. Fantastic performance that from Shashwat Mishra and Ayushman Dubey. But which team will finish in the second spot? Will it be Delhi Public School from Greater Noida or the Swaraj India Public School from Kanpur? It's between these two teams now. Time for a tiebreaker question between these two teams. Team 1 और Team 2, Delhi Public School और Swaraj India के बीच scores हैं tie. लेकिन अब खेलेंगे हम tiebreaker और ये रहे उसके नियम. Tiebreaker. Each question on the buzzer. First team to buzz and answer correctly wins the tie. If the team buzzes and answers incorrectly, the other team wins the tie. Quizmaster's decision is final. तो वही नियम बिल्कुल साफ है. दिल्ली पब्लिक स्कूल और स्वराज इंडिया कानपुर के बीच ये कश्मकश, ये टक्कर, क्या दूसरी पोजीशन तय होगी इस टाई ब्रेकर के इस सवाल से? ये रहा टाई ब्रेकर क्वेश्चन. The official mascot, the first of its kind in the ISL, is named Philly the Gaur. He's a gaur, which happens to be the state animal of the place where the team is located. Which team are we talking about? Delhi Public School, Greater Noida, and Swaraj India Public School, Kanpur, contemplating. It's a tough one, I must admit. The incorrect answer will mean the other team shall win. Neither of the two teams wanting to go for it. Okay, looks like we're going to have a longer tiebreaker. For our viewers, here's the correct answer. It is FC Goa. The correct answer is FC Goa. Neither of the teams got it. Moving on to the next question. Will this be the final question of this tiebreaker? Here we go. What does DRS mean in the world of Formula 1 racing? Delhi Public School going for it. Divyanshu and Mohammed. What is the answer? Decision review system. Is it the decision review system? It's the drag reduction system. Swaraj India Public School will win this. They will take the second spot. It would have meant decision review system in cricket, but in Formula 1 racing, DRS stands for drag reduction system. Delhi Public School were in a bit of a hurry and they made a mistake when they shouldn't have. They will finish on the third spot. Swaraj India Public School, Kanpur, represented by Kartikeya Chaturvedi and Prakhar Patel, will finish at the second spot. In what was a very closely contested, exciting UP State finale, Delhi Public School, Greater Noida, unfortunately with that error on that last tiebreaker question, ending up in the third spot. Divyanshu Chamoli and Mohammad Ayan, the odd mistake there, but a pretty good show there, making this finale a great contest. Divyanshu Chamoli and Mohammad Ayan from the Delhi Public School finishing in the third spot. Congratulations, the prize money of 50,000 of which will go to the school, and Divyanshu and Mohammed will share the remaining 5,000 rupees. Congratulations. And the team that was slightly fortuitous in the end, they can afford to smile now. Swaraj India Public School from Kanpur, कार्तिकेय चतुर्वेदी और प्रखर पटेल मुस्कुरा सकते हैं. बिल्कुल एक कानपुरिया मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हो सकती है, क्योंकि वो दूसरे स्थान पर रहे हैं. फिनाले तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी दूसरे स्थान पर फिनिश करने के लिए वो जीतेंगे 1,10,000 रुपए की राशि. इसमें से 1 लाख उनकी स्कूल को और 10,000 रुपए फॉर कार्तिकेय चतुर्वेदी एंड प्रखर पटेल. Congratulations on finishing at the second spot in this UP State finale. लेकिन आज का ये यूपी स्टेट फिनाले रहा सनबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी के नाम. शाश्वत मिश्रा, आयुष्मान दुबे जबरदस्त फॉर्म में बने रहे पहले राउंड से अंत तक, और ये है इस यूपी स्टेट फिनाले के विजेता जो पहुंच चुके हैं नेशनल फाइनल्स में. और इस
स्टेट फाइनल को जीतने के लिए इन्हें मिली है 2,75,000 रुपए की धनराशि, जिसमें से 2.5 लाख रुपए सनबीम स्कूल को, and Shashwat Mishra and Ashman Dubey will share a 25,000 rupee prize money for these two contestants. Fantastic performance there. This team from UP will show their prowess at the national finals, which will be aired on Star Sports and on Hotstar. और उस नेशनल फाइनल्स में सनबीम स्कूल वाराणसी का जलवा जरूर दिखेगा और मेरे हिसाब से हॉट फेवरेट्स हैं ये स्कूल उस नेशनल फिनाले में. But with that, we've come to the end of this UP State Grand Finale of the Fit India Quiz. A big thank you to the Ministry of Youth Affairs and Sports and the Ministry of Education for giving all of us, especially these youngsters, a terrific opportunity to perform on a platform like this. For now, this is me, Manish Batavia, signing off. Don't forget the magical mantra, fitness ki dose, आधा घंटा रोज.